informal session for all of you to discuss the upcoming exam, CSIR-NET, that is scheduled to happen in February 2025. So you have mostly less than 2 months approximately remaining for you. करीब करीब 2 महीने हैं अगर आप देखें. आप उनमें से छुट्टियां निकाल दीजिए, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन इफ यू आर डूइंग, अगर उनको निकाल दें तो मुझे लगता है कि 2 महीने भी आपके पास नहीं है. एंड what strategy you should use, that is an important concern now. You might be preparing for whole year. आप शुरू से अब तक इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, इसकी तैयारी कर रहे थे. Some of you might be doing self-study of your own. Some of you might be studying in coaching institutes. अलग-अलग जगह आप पढ़ रहे हो. तो अब इन 2 महीने में लास्ट रिवीजन आपको कैसे करना है, क्या चीजें आपको देखनी है, उनके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और कुछ सजेशंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस पोर्टल. एंड ऑफ कोर्स आई थैंक करियर एंडेवर which are facilitating this and bringing this information to you. करियर एंडेवर की मदद से आपकी तरफ आप तक ये जानकारी पहुंच रही है. तो आप कैसे इस लास्ट मिनट रिवीजन को करें, कैसे तैयारी करें ताकि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो स्मार्ट रहे और आप मैक्सिमम स्कोर फेच कर पाए बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स और योर लर्निंग. देखिए, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को, सारी यूनिट्स को इन डेप्थ शुरू से अंत तक पढ़ सकें, ना ही आप रेफरेंस बुक्स को उतना ज़्यादा देख सकें. तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जो जनरल प्रिपरेशन का वीडियो है, उसमें मैंने अक्सर आपको सजेस्ट किया था कि रीड डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स एंड रीड एज मच एज यू कैन डू. जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए. But that is for the people who are aiming this exam for the next particular session, maybe in December or so. उनके लिए ये चीजें applicable. But for you, when you have to do the revision, when you are targeting this exam, then those things are not applicable to you. आपके लिए वो चीजें apply नहीं होती हैं. So what applies to you? आपको कैसे तैयारी करनी है? Let's have a look at that. So first thing is, that is, have the syllabus on your table. Syllabus आपकी टेबल पर हर समय रहना चाहिए. You should have the quick idea of the entire syllabus कि आपके syllabus में है क्या. And at the same time, दूसरी तरफ आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? Previous year questions. ये 2 चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, which are required for this last minute preparation. एक और चीज आप अपने साथ रख सकते हैं, that is your own notes. Okay? अब जरूरत नहीं है आपको रेफरेंस बुक्स ढूंढने की या बहुत सारी किताबें पढ़ने की. बेस्ट ये है कि जो आपने अब तक तैयारी की है, अब तक मीन्स नॉट ओनली फॉर CSIR, but if you have passed your graduation, if you have passed your post graduation, and if you have those notes which match with your syllabus, अगर CSIR के syllabus से मैच करने वाले जो भी notes हैं, provided that they are yours, I will tell you the advantage. What is the advantage of reading from your own notes? तो ये चीजें आपके पास होगी. ठीक है, आपने ये तीनों चीजें नोट कर ली. आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए. और इससे बनेगी एक बहुत अच्छी रेसिपी 2 महीने की तैयारी. लेट्स सी. तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं. सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, CSIR की वेबसाइट पर अवेलेबल है, HRD की वेबसाइट पर. और आप जानते हैं कि CSIR-NET JRF के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट है. यू आर वेल वर्स्ड. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू गोइंग टू डू? सबसे पहली चीज आप क्या करें? सबसे पहले आप इन यूनिट्स को फिल्टर करें. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज filter out units. Filter out on the basis of what? कैसे filter out करें?
So there are 13 units and there is ample choice in the exam. You have to do only a limited number of questions. So of course you can do at least 1/3 of questions in part C and almost as less as half questions in part B. So it is possible that you can leave some topics or you can uh, I mean exclude them in your revision. आप उनको exclude कर सकते हो, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि किन यूनिट्स को छोड़ना है, किनको आपको नहीं छोड़ना. So let me remind you that the basis of excessive choice in your exam is on the basis of fact that you are from different streams. आप अलग अलग stream से होते हैं, इसलिए आपको exam choice दिखा, so that everybody is at the same level and the exam is fair enough to test the competency of everyone. That's the logic behind a lot of choice in your exam. Now you can take advantage of that choice and find your own expertise based on your BSc degree, based on your MSc degree. आप अपनी BSc और MSc की डिग्री और आप अपने खुद के कॉम्पिटेंस के बेसिस पर पहले एटलीस्ट 4 यूनिट्स को फिल्टर आउट करो. कोई 4 यूनिट तो होंगे जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी. अगर आपने BSc लाइफ साइंस किया है, MSc लाइफ साइंस किया है, so you must be having these things in your syllabus at some point of time. Now I will give you some examples. जैसे कि अगर आपने MSc जूलॉजी की, फॉर एग्जाम्पल आपने MSc जूलॉजी किया है और BSc जूलॉजी भी किया, तो देखिए जूलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से क्या चीजें आती हैं. दे स्टडी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. दे ऑल्सो स्टडी एनिमल टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी भी बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं. और साथ ही साथ आप एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री के बारे में. राइट, बायोकेमिस्ट्री इज जनरली अ पेपर इन जूलॉजी, developmental biology is also a paper in zoology, and evolution is also present in zoology. Now interesting thing is that कि इन यूनिट्स का आपका आधा आधा हिस्सा होगा. अगर आपने जूलॉजी किया है तो आपको 50% यूनिट कवर होगी, क्योंकि 50% बॉटनी का भी पार्ट है. इसी तरह से आपने MSc बॉटनी किया है तो भी आपकी 50% यूनिट कवर होगी. आपने बॉटनी किया तो आपको एक एज मिलेगी कि आपने इकोलॉजी वहां पर ज्यादा पढ़ी होगी, so you can choose for botany in that. So look at the fact that there are some units which are exclusively for MSc botany students. There are some context of those units which are for both botany and zoology students. तो जो प्योरली आपके एरियाज, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, so I will figure out this as my primary unit. इसको मैं अपनी primary unit मानूंगा, इसको मैं अपनी primary unit मानूंगा. I will take this as 50% weightage क्योंकि इसकी आधी आधी यूनिट कवर हो पाएगी. I'll give this as half unit. So 2 यूनिट तो पूरी हो गई, and then I can give 50% of weightage to this. So half ऑफ यूनिट करके मैंने 2 यूनिट और कवर कर. So total 2 + 2 4 पोर्शंस मैंने कवर कर लिए. यानी कि आपको 4 यूनिट्स, या तो पूरी पूरी 4 यूनिट्स, या फिर आप पार्ट्स में भी लग सकते हो. अगर आप आधी आधी यूनिट ले रहे हो तो आपको फिर 2 + 6 करके करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने किया. कुछ लोग हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जो MSc बायोटेक पढ़ते हैं वो टेक्सोनॉमी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ते. दे स्टडी मोर दिस पार्ट. वो लोग इस पार्ट को ज्यादा पढ़ते हैं. कौन कौन से पार्ट? दे स्टडी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, molecular biology, immunology. So these are the things which are very, very common for biotech students. So if you are MSc biotechnology student, even if you are MSc biochemistry student, these may be the common topics for you. अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ा होगा, मेथड्स के बारे में आपने ज्यादा पढ़ा होगा. So based on that fact, you can first choose
4 यूनिट्स। ठीक है, आपने 4 यूनिट चूज करें, तो 4 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बिल्कुल एक्सपर्टीज के एरिया में बिलोंग करती हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू हैव स्पेंट टाइम इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, so emphasize and give more time to those units which you already know. Then you can go for the next. फिर आप क्या करोगे, ये जो हमारा पहला स्टेप हो गया, choose 4 units which you call primary units, then choose 4 more units, फिर आप 4 और यूनिट चूज करो which you call secondary units. Now what are secondary units? Secondary units आप किन्हें कहोगे? So if you are a student of a coaching institute, or if you are doing a self-study, during the preparation for this exam, you would have studied some more units beyond your area of expertise, which you might feel interesting and in which you developed some interest. And when you did some routine test, जब आपने टेस्ट दिए थे, एग्जाम दिए थे, तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स आए थे and you feel confident about it. So 4 units आपकी यहाँ हो जाती हैं and you pick 4 units here. I'm not forcing you to choose any unit because the weightage of every unit is almost equivalent. And there is no point of suggesting you some potential units or high scoring units. Those who do, they generally mislead you. अगर कोई ऐसा करता है कि आपको कोई कह रहा है कि ये वाली यूनिट करो, ये मत करो, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, that's simply a misleading information. But the matter of fact is, you should choose any 4 units of your primary interest, and then you have to choose 4 more units which are of your secondary interest. So although these 4 plus 4, 8 units, if you are confident enough, if you score 70-80% marks every time when you attempt questions on that, they will be good enough to make you qualify in that exam. That is what statistics says. I'm not saying that. And that is what experience of the people says. And then if you wish, you can mark 2 more units as tertiary units. आप 2 यूनिट्स को और डिवाइड कर सकते हो और प्रेफर कर सकते हो जिन्हें आप टर्शियरी यूनिट्स. नाउ वंस यू हैव मार्क्ड दोस यूनिट्स, देन हाउ टू डू दैट, कैसे आपको पढ़ाई करनी. सो देयर आर 2 ways. Approach 1, so you have everything scheduled. That means you make a complete time plan. आप पूरे 2 महीने का डे बाय डे टाइम प्लान बना लो, and what you do is you spend or you allocate a week to a particular unit. एक पूरा वीक एक यूनिट को allocate कर दो, and you do only that unit in that particular week. Let's say you have allocated the first week of January for biochemistry. So what you need to do in that entire week, आपको क्या करना है उस वीक में, and accordingly, since you have 8 different units, क्योंकि आपने 8 यूनिट चूज की हैं, तो प्राइमरी इंटरेस्ट की यूनिट को आप एक वीक दे दो, और जो सेकेंडरी इंटरेस्ट की यूनिट है उनको आप हाफ वीक दे दो. So in that manner, you will be able to complete that in a 1.5 month. 1.5 महीने में आप ये पूरा कर पाओगे. Now what you have to do in that 1 unit, क्या करोगे आप? So a very simple strategy can be, start with previous year question papers. आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब उस सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करते हैं, so you start with previous year questions. Just have a glimpse of that. Don't spend much time on that. ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें, आप glimpse ले लें. So just have a quick glimpse of what kind of questions have come from biochemistry part, and then maybe like you spend 30 minutes on that. Don't spend too much of time. Just have an idea about what kind of questions have come. Do not try to solve them or do not get deeper into that, but just take a glimpse. And then you perform a detailed revision. Okay? So you can then
since you have divided it in 1 week, तो आप एक वीक में फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स. Suppose you have 10 topics in a unit, then you can take 2 topics every day, depending on the size of the or volume of the content in every topic, and you can do it on daily basis. Now, how to do detailed revision? For this detailed revision, you have to go through your notes, read them once, write the important information, also read some kind of reference materials for tough concepts. अगर कोई concepts ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आए, so you read them from reference material or discuss with your peers, I mean friends, or if there is any guide or a person who is teaching you, आप उनकी मदद से उन doubts को clear करो. So you can spend 30 to 40 minutes after your revision on this particular format, that is discussions. So you discuss with your friends. And then finally, you spend 30 minutes for a recapture of everything that you have to learn. So suppose you have learned something today, you have revised today, you try to recap. So the best way to recapture is if you are doing study in a group, or agar aapke koi friend hai, so try to explain that concept to your friend, maybe over the tea, or you just walk out, and without the help of any support material, try to explain that concept to a person who is with you. If nobody is there, just try to remember and recall it yourself, and maybe in front of a mirror, or maybe in front of a desktop or a computer, you can try to recall that information verbally. So there is no requirement of any study material, and then see what you forgot and what you remember. क्या याद रहा आपको, क्या भूल. So this might spend, and this might take about half of the day. By evening, you will be ready to perform test. So here you go to previous year questions once again, and then you start attempting those questions which belong to your area of interest. And without seeing the answer key, you perform those questions in a way that you are doing it in exam, mark answers, and check them. Okay? So those answers which were found to be incorrect, जो गलत थे आपके questions, उनको आप underline करो, उनको highlight करो, और highlight करने के बाद उनके concepts को दोबारा जाकर. So again, you can take help from your guide or peers, and you can clarify your concepts, and then once again try doing those questions. So by the night, late night, you will be able to do this entire thing, and maybe just before you sleep, you perform another practice test. So you just take a random test which is not from previous year questions. You may be having some practice test books, or you can buy them from the market. There are plenty of them. So you can perform the test by yourself. आप अपने आप test कीजिए, और उसके बाद आप आराम से relax कीजिए and सो जाइए. While you are sleeping, just you can recall what you have to learn today. So this is one approach. This is how you go for unit by unit and week by week. And then you can reserve last 3-4 days for once again revising the whole course. एक तरीका के लिए. But this approach might not work for everyone. People might get easily bored reading same thing from morning till evening, and their efficiency might decrease sometimes. So there can be another approach. You can parallelly start your primary units, which you know very well, and your secondary units, which you have acquired during the preparation. So you can spend 50% of the day here, and you can spend remaining 50% of the day preparing here. Now the advantage is, earlier you were allocating 1 week per unit. Now here you can allocate at least 1.5 weeks for 1 year. So basically your 2 units will be covered simultaneously. You can expand the week, and then accordingly you can give more time to a specific topic. You can reduce your workload every day, and you can avoid yourself from the monotonous way of preparing. ऐसे में क्या होगा कि आप अगर दूसरी अप्रोच फॉलो करेंगे, एक ही दिन में 2-2 यूनिट लेकर चलेंगे,
तो इससे आप मोनोटोनस होने से बच जाएंगे। नाउ हाउ यू डिसाइड दैट what will be the first unit, what will be the second unit, which unit you will be first, and then which unit will be read later on. So the division, I mean, it doesn't mean that it has to be done in the evening, it has to be done in the morning. The best way is look at the difficulty level. जिसमें difficulty level ज़्यादा है. And I think since you have chosen the primary based on your expertise, so obviously this will be more difficult for you, क्योंकि ये आपने केवल अभी recently ही सीखी है चीजें. So do this practice when you have a much fresh mind. सुबह उठने के बाद जब आपको नींद कम आ रही हो, जब आप फ्रेश हो, तब आप इसे पढ़िए, राइट. इसको आप यू कैन शिफ्ट इट एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये आपका एरिया है, आपको इंटरेस्ट भी आता है इसमें, आपने पढ़ा भी है, तो शायद आप इसमें आसानी से रिलैक्स फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं. एंड देन द वर्क फ्लो विल गो सेम. You read concepts, you revise, you test, and then you retest. So this is how you can go with your preparation. इस तरह से आप quickly approach लेकर preparation कर सकते हैं, and you can give plenty of time to different units. Now this was for the solitary or group studies. You can study with your peers, अपने friends के साथ पढ़ सकते हैं, group में पढ़ सकते हैं, या फिर अकेले भी तैयारी कर सकते हैं. Now what else is needed apart from this? What else you need to do? So it is important to keep good health. It is important to keep good nutrition. अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, अच्छा न्यूट्रिशन भी रखना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कीजिए आप. If you practice yoga, that will be really good, because that will keep you fresh and your mind will be really active when you do these things. So practice these things along with your preparation and make them the part of your strategy. अपनी strategy का part बना लीजिए. Now, besides that, what else can be done? Can there be another strategy? क्या और कोई strategy भी हो सकती है? Yes, there can be one more strategy. So that strategy is very different from the previous two strategies, where you have selected the units and then you have gone for choice, primary, secondary, and then you have made your revision. But let's say you are from a branch or you have done preparation for years. अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, पहले भी आपने सारी यूनिट्स पढ़ी है, अगर आप सारी यूनिट्स में वेल वर्स्ड है, सब कुछ आपको अच्छे से आता है. So basically, if you are repeating the exam and if you are left with low margin, अगर आप बहुत ही छोटी मार्जिन से छूट गए थे, रह गए थे, so the first thing that you need to identify is you identify your gray areas. So your preparation will be different from the preparation of freshers or others. आप अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए. ग्रे एरियाज के मतलब आपकी वीकनेस, आपके कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं या कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आप करना तो चाहते हो, आप करके भी आए थे एग्जाम में, लेकिन वो गलत सबसे ज्यादा हुई. दैट मीन्स वो एरिया आपका इंटरेस्टिंग एरिया है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको डीप में ना पढ़ने जानने की वजह से आप उसके क्वेश्चन गलत करते हैं. सो आइडेंटिफाई योर ग्रे एरियाज एंड स्पेंड 5 to 10 days on those areas. आप 5 से 10 दिन अपने रिवीजन के उन एरियाज पर दीजिए, उनको डीप में पढ़िए, बिकॉज यू हैव द नॉलेज. आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं, यूनिट का आइडिया है, आपको ये भी पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, PYQs आप कई बार कर चुके हैं, तो आपके लिए वो स्टैंडर्ड अप्रोच काम नहीं करेगी. What you have to do is you have to go with this approach and you have to find your gray areas and you have to particularly work on them for the longer period of time, right? So work on those particular areas, and then of course what others will do, you can do that in limited time. जो preparation बाकी लोग 10 दिन में करेंगे, वो आप 3-4 दिन में भी कर सकते हो. But again, the degree of monotonousness or boring nature of study, that can be more for you. आपके लिए वो चीज ज्यादा हो सकती है अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद फिर CSIR दे रहे हैं. तो आपको ऐसे में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को एंथुजियास्टिक रखने के लिए, कि आप वो क्यूरियस रहे उन चीजों के बारे में कर पाए,
So I will say you can also check for new literature. आपने जो चीजें पहले पढ़ ली है ना, वो तो आपने पढ़ी ली है, उनको रिवाइज करने के लिए यूज भी करो, लेकिन डेली डेली आप कुछ नई चीजें भी पढ़ो. अगर आप टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हो तो लुक फॉर द न्यू थिंग्स दैट हैव कम इन द फील्ड. If you are reading developmental biology, look for the new things. So that will not only be helpful for your exam, but it will also be helpful to keep the charm in the field. You will feel that you are learning something new, and then you will keep yourself ready for what may be coming next. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं नेट में जो recent developments के ऊपर होते हैं. For example, CRISPR-Cas. So this is not the part of a regular syllabus, but there may be questions on CRISPR-Cas. So I will not suggest this to be read in detail by the student who are first time attempting for the CSIR exam. But when you are repeating that, you know a lot of other things previously, and you can spend time on topics such as CRISPR-Cas or those which are new. You can spend more time on. तो आपके लिए ये strategy काम करती है, which is from this particular set of things. So इस चीज को आप ध्यान रखें. So I have told you plenty of strategies, and of course, everyone can make their own plans. It is your exam, it's your fate. I can only suggest you that how to do it. But of course, if you need preparation guidance, if you need to attend some test series or attempts, so various institutes, including the career endeavor, they can provide you all India test series. You can attempt that. You can be part of that for evaluating yourself, and then you can appear much prepared and much better in the exam. Wishing you all the very best for your exam. Thank you very much.